Say screen is visible to you? No. Not visible. Is it visible now? Yes. Okay. Fine. So today we'll revise for your half yearly exam, or you can say midterm exam. Just a minute. So we'll start from the first chapter and we'll keep on revising the thing. तो लास्ट क्लास में जैसे मैं बोला था तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, गॉस लॉ, राइट? Yes. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक force between the two charges? If there are two charges, Yes. if there are two charges, let's say E q1, equal to q2, they are separated by a distance r. So what will be the force between them? E. What will be the force between them? That is called Coulomb's force, right? Yeah. Yeah. So what is Coulomb's force we have discussed? That is F equal to K K Q1 Q1 Q2 K by R by square. R square. And K का वैल्यू क्या होता है? K का वैल्यू 9 into 10 raised to 9 9 into 10 raised to 9. Newton meters Okay. Newton Coulomb square. meter square per Coulomb square. Right? Yeah. So this is your Coulomb's force we have discussed. Now we also have discussed electric field. So what is electric field? We represent with the symbol E. So field is F by Q. What is field? What is electric field? Surrounding old electric field. Yeah. Electric field is F by Q. Q. And electric field is the region that is the surrounding of that charge where you can experience the strength of the charge, right? That is called electric Yes. field. Good. So now E equal to F by Q. E equal to F by Q, and this is called electric field formula. So what is electric field formula then? It is K only single Q. Because one Q already you have divided. Yes. One Q you remove from the 4. So K Q by R square. This is the electric field. Magnitude you can write. Yes. What is SI unit of electric field? Newton by Coulomb.
Yes, Newton by Coulomb or Newton Coulomb universe. This is the SI unit. SI unit of your SI unit of electric field. Now, also we have discussed about Gauss law, flux. Now, before that, we'll discuss dipole. What is dipole? So, dipole question you will get. Dipole in magnetic case also you will get external field, and like magnet is also a dipole type, and also you will get a question like a dipole in an external electric field. So what will happen if we'll keep a dipole? So what will happen if we'll keep a dipole inside a external field? So what is a dipole, you know? Yes. Dipole Two means, equal unlike charges. yes, two equal unlike charges, two equal unlike charges Separated by a small small distance. distance. Like we can say 1 plus q and another is minus q. Unlike charge, but equal amount. Let's say it's 2 coulomb, 2 microcoulomb or millicoulomb, microcoulomb, let's say, and another is minus 2 microcoulomb. Two charges, same magnitude, 2 microcoulomb, 2 microcoulomb, but separated by a very small distance. That's called dipole. Now, if we keep this dipole inside the external electric field, what will happen? This is an important question. Dipole in an external field. Dipole in a external field. What will happen if we keep a dipole in an external field? Now, let's say this is the external field, external electric field E. If we keep a dipole, let's say this is your dipole, right? So it has two charges. इसमें दो charges है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू. तो इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या करेगा? प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस क्यू विल गेट ए रिपल्सन. उसको रिपल्सन मिलेगा, धक्का मिलेगा ऐसे. समझ में आ रहा है? प्लस क्यू को क्या होगा? प्लस क्यू को एक धक्का मिलेगा. प्लस क्यू विल बी रिपेल्ड. Plus q will be repelled. And what about the minus q? It won't be repelled. Minus q will be attracted, right? Yeah. What will be happen to minus q in external field? So minus q will be attracted. उसको फील्ड अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्यू को रिपेल करेगा. तो रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर दैट? रिजल्ट ये रोटेट करना चालू करेगा, क्योंकि प्लस क्यू रिपल्सन देगा और माइनस क्यू क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा. तो अल्टीमेटली what will happen? Ultimately, what will happen?
So ultimately what will happen? It will ripple. It will start rotating. ये रोटेट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन में उसको क्या मिल रहा है, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में उसको लाइक एक डायरेक्शन में पुश मिल रहा है और एक डायरेक्शन में पुल मिल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको क्या हो रहा है, Yes. वो रोटेट करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, वो रोटेट करेगा। तो रोटेट True. करने से क्या होगा, टर्क आएगा, there will be torque if something is rotating, then what will happen, now there will be a torque on it। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा फिर, व्हाट विल बी द टॉर्क वैल्यू, E by 2 kp. नो, टॉर्क विल बी क्या होगा, टॉर्क विल बी पी क्रॉस ई, टॉर्क क्या होगा, P cross C. टॉर्क विल बी पी क्रॉस ई। पी क्या होता है, व्हाट इज पी, पी होता है डाइपोल मोमेंट, पी क्या होगा, Dipole moment. पी विल बी डाइपोल मोमेंट, पी विल बी डाइपोल मोमेंट, ओके। पी विल बी डाइपोल मोमेंट। Yeah. तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये होता है 2aq, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, 2aq. डाइपोल मोमेंट इज 2aq। हम्म, Yeah. डाइपोल मोमेंट इज 2aq। 2a, व्हाट इज 2a, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये डिस्टेंस को हम लोग 2a लिए हैं, 2a Distance. डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको हम लोग 2a लिए हैं, और q है एक इधर चार्ज, सो डिस्टेंस बिटवीन द charges, this is 2a into q, this is your dipole moment, this is your dipole moment। तो p क्रॉस e को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P equal to Q into 2a. हम्म, P equal to Q into 2a. हाँ, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, p क्रॉस e ना, Yeah, yeah. क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या टर्म आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो a क्रॉस b क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा आएगा। Yes. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं पीई को लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, दिस इज योर टॉर्क, और हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्या है, 2aq साइन थीटा, ई साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, 2aq 2 E sin theta. ई साइन थीटा। सो एक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, इफ विल कीप ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट विल हैपन, डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस Positive Q will be
repelled, and minus q will be attract. Yes, positive q will be attracted, repelled, माइनस Yes, भी attracted. तो एक साइड में रिपल्सन होगा और दूसरे साइड में attraction. अट्रैक्शन होगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, राइट? Yes, अल्टीमेटली इट विल रोटेट. जब वो रोटेट करेगा तब क्या होगा, रोटेट करने से क्या होगा ना, रोटेट करने से उसके ऊपर टर्क हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क. ठीक है. और yeah. टॉर्क कितना होगा, 2a/q/e sin थीटा. बहुत बार ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है. और व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो डाइपोल ऐसे अलाइन करके रखा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एंगल थीटा है ये. Yes, So theta is the angle between dipole. dipole and the electric. Electric. तो इससे हम लोग E दे दिया, Q दे दिया, उससे हमें टॉर्क निकाल ले, रोटेशन कितना होगा पूछ रहा है, या उसमें एंगल कितना करके रखा गया था वो पूछ सकता है. तो वेरियस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड अपॉन दिस. Okay. Sir, can बेस्ड you अपॉन, see important question of this chapter from the NCERT reader, yeah. So which these are I the, can study? yes. So this dipole in an external field, you just open after the dipole, this part is there. Dipole in a uniform external field. So this one is an important part for the exam. Now another two exam important question for the exam is based upon dipole itself. That is the electric field Lines. on the end on or axial position on the dipole, and electric field on the equatorial position of the dipole. So these are two important questions for the from the dipole and also from the electric charge. And yeah, so what is that? The electric field on the axis of the dipole. Electric field on the axis of the dipole. Could you find from the in the NCERT book? Electric field on the axis of the dipole. तो वो क्या होता है, डाइपोल ऐसे हो गया, -q +q और +q -q ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मीन्स ये है एक्सिस के ऊपर. तो एक एनी पॉइंट, सपोज मैं कोई पॉइंट ले लिया P, है ना, एट एनी पॉइंट P ले लिया, और वो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो हम लोगों को क्या पता है कि एक पॉइंट चार्ज सपोज प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होता है, अवे होता है. Yes. और एक नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, टूवर्ड्स. Near. ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, इनवर्ड. Yeah. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. these are the electric field lines for the positive and negative. ये डायग्राम भी कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में स्पेशली. You will write CBSE board exam, right? Yes. Okay. So
ये भी कभी कभी पूछता है, इट ऑल्सो आस्क समटाइम्स इन बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस ईयर पूछा ऑलरेडी, एक क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ करो, सिंपल एक चार्ज दिखा देना है और ऐसे अवे अवे करके डायग्राम बना लेना, ठीक है। Okay. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इधर देखो डाइपोल में हमारा क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, दो चार्जेस है। Yes. देयर आर टू चार्जेस फॉर दिस डाइपोल, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। तो फॉर प्लस चार्ज व्हाट विल हैपन, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अवे होगा। तो पी पॉइंट में हमें पूरा डाइपोल के लिए निकालना है, नॉट ओनली सिंगल चार्ज। हमारा टारगेट क्या है, फॉर द फुल डाइपोल वी हैव टू फाइंड, फॉर द कंप्लीट डाइपोल वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें करना क्या है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव, Yes. वो पॉजिटिव चार्ज को के लिए एक डाइप फील्ड होगा, दैट विल बी अवे, तो इसको लिख देंगे ई प्लस क्यू। फिर ये नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड होगा, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, E minus Q. ई माइनस क्यू। और ये दोनों फील्ड को ऐड करने से हमें मिल जाएगा टोटल फील्ड एट पी। ये क्वेश्चन, Yes. दिस क्वेश्चन कम्स रिपीटेडली। सो we will use, what we'll do, we'll use the formula for, we'll use the formula for E the, plus Q. या ई प्लस क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे और ई माइनस क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल फील्ड निकाल देंगे, है ना। दोनों को Yeah. ऐड करके टोटल फील्ड निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, E plus Q equal to KQ by R minus A square. राइट। सो ये दोनों का डिस्टेंस हम लोग क्या ना 2a था, तो मिड पॉइंट आधा से आधा ये a हो गया, और ये मिड पॉइंट से ये पॉइंट p का डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट से Yeah. p पॉइंट का डिस्टेंस को r मान लेते हैं। तो q से p तक डिस्टेंस को क्या होगा ना, r माइनस ए लिख सकते हैं, और R minus R minus A square. माइनस क्यू से p तक डिस्टेंस को, ये पूरा डिस्टेंस को कितना मान सकते हैं ना, R r, minus. r प्लस से मान सकते हैं, है ना। Yeah. ओके, सो r माइनस से r प्लस से हम लोग मान सकते हैं। अब e प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा देन, तो e प्लस क्यू का वैल्यू हो जाएगा, E plus KQ. तो e प्लस क्यू का वैल्यू हो जाएगा कितना, दैट इज के क्यू KQ R R minus A square. होल स्क्वायर, ये हो जाएगा e प्लस क्यू। और u माइनस क्यू का, Yes. e माइनस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, E के minus Q equal to KQ by R plus A square. प्लस आर स्क्वायर, वेरी गुड। अब क्या करना है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, प्लस क्यू को लेफ्ट है, ई माइनस क्यू को राइट है। तो नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड होगा, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट कर देना, मतलब Yeah. अपोजिट साइन है ना, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। Opposite. Yeah. टोटल 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 ई कितना होगा, ई प्लस क्यू माइनस ई E माइनस क्यू। minus Q. तो बेसिकली E ये हो plus Q जाएगा, is our KQ R minus A whole square, के क्यू कॉमन ले and लेता E हूँ, minus Q is Q R plus whole या square. आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस आर क्यू बाई 1/r+a स्क्वायर, राइट। Yes. कॉमन ले लिया, उसको एलसीएम निकाल के इसको फाइनल एक्सप्रेशन निकालो।
डन। हो गया? डन। या तो कितना मिलेगा हमें? ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का ऐड करने से इसको कितना आया रिजल्ट? 4ar ई इक्वल, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको न्यू स्लाइड में कर लेते हैं। यस तो हमें कितना मिल रहा है? ये ई इक्वल टू के क्यू तो कॉमन था, एलसीएम कितना था हमारा? एलसीएम आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। या आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। यस एलसीएम इसको ले लिए तो न्यूमरेटर में क्या होगा? आर माइनस ए स्क्वायर कटेगा तो आर प्लस ए स्क्वायर ए होल आर माइनस ए आर स्क्वायर। माइनस ए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। 2a आर 4ab। 4a ना, तो के या ये हो जाएगा 4ar डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा? आर माइनस ए। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? या सो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना? यस तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी एक रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। गेटिंग और नॉट? यस तो ये हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं कि आर इज ग्रेटर देन ए। व्हाट इज ए? ए इज द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। टोटल डिस्टेंस 2a होता है, हाफ डिस्टेंस a होता है डाइपोल का। हम्म? यस तो r is the half distance, so r is very, actually this distance between the two charges is very small in case of a dipole. तो a भी बहुत छोटा है, लेकिन r is a point outside the dipole on the axis। ठीक है, हम्म r will be much greater than a। so if it is greater than, then this square a square is insignificant, उसका कोई significance नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा, छोटा नंबर होगा। so if it is a small, very small number, so what we can do, e equal to kq 4ar, तो a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो नीचे क्या होगा? r टू द पावर 4, तो 4a यस जाएगा तो क्यूब रहेगा। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, e इक्वल टू 4a और क्यू के बाई आर टू द पावर 3। और 4a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन टू नो नो आज के यही होगी 2aq के बाई आर क्यूब। आर स्क्वायर आर क्यूब। तो 2a क्यू क्या होता है? 2a क्यू होता है p। या तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एंड k को व्हाट वी कैन राइट, 1 टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जनरली या व्हाट, ई 2p बाई
1 R cube. yeah k को I'll write 1 by 4 pi epsilon r cube. So this is the electric field vector magnitude. If I write direction, so what will be the direction of the P? The Opposite. direction is, suppose this is minus q, this is plus q. The direction of the dipole is P vector is minus to plus. Remember this. Yeah. Now here what we have done, now plus q was near, so the strength plus q will be more, right? And minus q is far, so strength will be less. So net field will be towards the positive direction, left direction. So this is basically opposite direction of Electric field. dipole. Yeah, electric dipole. तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 वेक्टर फॉर्म होगा तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि पी जो वेक्टर है डाइपोल का वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? Dipole. हम लोग स्टार्टिंग में फील्ड का डायरेक्शन ले लिए थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं. Electric dipole will be 2 kp r square r cube. 2p by r cube. 2p by r cube, R right? cube. Yeah. So no need, because already we have taken the negative sign in the beginning. The direction we have already taken at the beginning, right? Yes. That for the minus q, e plus is opposite direction. So we have already included the direction. So this is right. So what we are getting? Yeah. 2p vector by 2p kp by r cube. 4 pi epsilon. 2. So this is your electric field. 2p vector by r cube. Yeah. So we can write in this one, in vector form we can write down. Then what about equatorial points? Equatorial derivation you can do, right? Yes. Okay, so then you can try that, the equatorial one. So then the dipole okay. So Sir, we'll mark questions from NCERT reader. Important. important questions. Okay.
So important questions. Now you note down the important questions. So important. From this chapter, like start Yeah. So from this chapter, all as I the told you, dipole, your axial and equatorial, page number. then application of Gauss law. Chapter number. This is the first chapter, na electric. Chapter 1. Let's right. Yeah. So application of Gauss law, that is on the wire, then sheet and sphere, sail, hollow sphere. Right. So these are the questions from first chapter. It's important question, and also we have discussed dipole in external field, uniform external field, dipole in uniform external field, and small short question like your electric field, electric field, electric force. Okay. So all these are the important force, important questions like flux. From the flux also, from this formula, numericals may come, right? That flux equal to E dot A, or you can say E cos theta. Flux equal to E a cos theta. So theta will be given, electric field will be given, area will be given, right? Okay. So it will be asked that find out the flux. So these numericals will be it is important from this chapter. Also the diagram, as I told you, field lines diagrams. These questions also may come. Yeah. Also, we come like for a system of positive and a negative. If two charges are there combined, what will be the field lines? How the field lines will look like? Only for single charge. एक single charge के लिए क्या होगा? Now we'll come to chapter 2, important question, right? So we will mark the question and answer from NCERT reader. Exercise questions. Okay. So one thing I'll do after the class now, I'll send you from all chapter the important topic in the group, right? Questions also. Exercise questions. Exercise questions, the backside is there. Important question, numericals, like whatever the topic I'll tell you, those topic based question you can solve. Not all the question you will be able to solve, but whatever the time left, you can try the questions, right? But the theoretical questions must be theoretical question must be you should able to do that. So from this chapter, let's say the first chapter, what are the important questions? The numerical may come like using the
your Coulomb's force. Field also, the numerical comes with Okay. field. The numerical will come Okay. in the flux, right? Okay. Yeah. So you can try like numerical. One example you can see, example 1.12. 1.12. Yeah. The Example electrosphere, that one. example 1.12. This question, the electrostatic force on a small sphere of charge is 0.4. This. Yeah. So the question is that an electric field. This type of question also have come in the your board exam also. So the question is there is a cylinder and you have to find out an electric field is uniform and in positive direction, x direction. So the electric field is in positive x direction and uniform with same magnitude everywhere and negative x direction for negative x. The value of electric field is given to you, that is 200 I cap Newton per coulomb. So this is the electric field value given to you and it is uniform. So in plus I direction, that means in x direction it is this one, and for the negative x direction it is E equal to minus 200 I cap Newton per coulomb. That and the exercise question. This is example 1.12. Example or example question. Example. This is example. Okay, I got. So this question is very important. This type of question, many type of in the exam it has come. Like inside a cylinder, inside a cuboid or cube. Right? So you can try it. Yes, sir. So you have to first find out the flux for it.
So how will you calculate the flux? Flux formula, as I told you. What is the flux formula? Flux formula is EDS cos theta, right? And from the center, the distance is given what? 10 centimeter. This is 10 centimeter. This is 10 centimeter. Centimeter distance. So what we have to find out? We have to find out the flux. Now you know that the flux is EDS cos theta. What is Yeah, it? DS? DS is the area vector. area of the vectors. What about the flux with the curved surface? Now with the curved surface, the theta is 90 degree, right? Because this is area vector and this is your Yeah. electric field vector. So angle is 90 degree. If it is 90 degree, cos 90, cos Hmm? 90, cos 90 value is what is cos 90 Zero. value? 0, right? Yeah. Yeah. So EDS cos theta. So phi equal to EDS cos theta. And for curved surface of the cylinder, cos theta is 90. So cos 90 0. So no flux. So where are the fluxes? The fluxes are with the two circular surface at the end, this side and this side. Clear? So that will be the total flux. Yeah. So now Okay. let's find out the separately flux at left. So flux at left is E. E will be for the left, it is minus 200. And area vector also to the left. So it will be minus. So minus minus we can write plus. Because area vector also to the left side. So it is negative. So minus minus plus. So 200 and area vector is given what? Even in the question you read it. Area vector is Yeah, 200. radius 5 centimeter. 0.05 Yeah. 0.05. This is centimeter. radius. So area will be what? This is circle. The circle area is pi r square. 1.57. Circle area is pi r Yeah. square. So pi into r is 0.05 whole square. Right? So this is pi l. If you multiply it, 0.05 means 25 by 100 into 100. Then you cut it and get multiply and check. You should get the number 1.57. You will just multiply and check. It should be 1.57 न्यूटन. फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन कूलम इनवर्स. Meter square coulomb. Yes, meter square coulomb inverse. This is the unit of flux. So this is only left side. Right side का कितना आएगा? Same आ जाएगा. Right side also same because 200 E is 200 right side and delta S is again pi into 0.05 square. So we'll multiply, you'll get Yes. 1.57. Newton meter square coulomb minus 1. Okay. So then what is the total flux? Yeah. Total flux is phi left, Total phi right, flux. phi left plus phi right. So we'll add 1.57 plus 1.57.
That means Yeah, total equal flux, to 3 point. yeah, it will be 3.14 Newton meter square coulomb minus 1. Okay. Yes. Okay. So this is total flux. Then next part of this question is what? What is the next part of the question? What is the net Net cylinder? charge within the plug. What is the inside the cylinder? What is the net charge? Let's say. What is the net charge inside? तो net charge कितना होगा? What is the Gauss law? Gauss law से हमें क्या पता? Flux equal to Net charge net charge inside. 3.14 Yes. into So net charge equal to Q phi into epsilon naught. तो phi 3.14 epsilon naught का वैल्यू पता है हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो phi इक्वल टू Q इनसाइड इक्वल टू phi into epsilon naught. Phi का वैल्यू कितना है? 3.14 3.14 8.85 into 10 to the power minus 12. तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा अप्रोक्स 2.78 into 10 raised to minus 7. 10 raised to minus 11. ठीक है? Yeah. Okay, fine. So you just go through it. We'll discuss some more things tomorrow. Okay. Bye. Thank you. Yes.